Hello everyone and welcome back. If I die today and wake up in hell tomorrow, it will take me weeks to realize that I'm not in architecture school anymore. This is architect Sheheryar. The only difference would be my final jury ho chuki hogi. This is architect Maheen. And you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. So last week हम लोगों ने एपिसोड 12 में बात की थी कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को 1 से 2 साल जो है किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के साथ काम करना चाहिए, किसी फर्म के साथ काम करना चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि यूजली हर ग्रेजुएट की डिज़ायर है और वो लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है, विच इज़ बेसिकली परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स is not only a degree, it's not only a qualification, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही होती है, आप ग्रूम हो रहे होते हो, आपको एक एक्सपोजर मिल रहा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी सीवी में भी ऐड ऑन हो रही होती हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी ऐड ऑन हो रही होती हैं। ऑल्सो जब मास्टर्स कर लेते हैं तो आप डिफरेंट लेयर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो अपनी फील्ड की भी होती हैं और वो सब फील्ड की भी होती हैं। So for today's discussion, जो हमारे गेस्ट हैं, he is not only an architect but he is also an interior designer, a master's degree holder, someone who has done his masters in urban and someone who has been working in the field for the past 3 to 4 years, बल्कि शायद इससे ज़्यादा। काफ़ी रिमार्केबल काम है, कमेंडेबल काम है। We welcome to our show architect Rao Umair Afzaal. Thank you very much for having me. Okay, so मैं we would like you to tell our viewers अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, आपने बैचलर्स कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया और at the moment क्या कर रहे हैं आप? Okay, first of all, thank you for having me again. So my name is architect Rao Umair. I did my bachelor's from NUST in 2015. Then I went for my master's in 2016 to Australia. I did my master's in urban design, and after returning, we've been working as ARSYN. So basically, this is a firm that I co-partner with my friend, architect Arslan Alvie, and we've been very fortunate to have a very good team of about 12 to 13 people now, and we're working, alhamdulillah, in Pakistan as well as internationally. That's amazing. Can you tell what does ARSYN stands for? So ARSYN basically, that's a question that we get a lot. ARSYN basically, it means warrior, and it stands for Alvie and Rao Architects Syndicate. Okay. So it just means it's a consortium of architects working together under my and Alvie's name. That's amazing. So majority हमारे यहाँ जितने भी अंडरग्रेड्स होते हैं उनको आफ्टर ग्रेजुएशन होता है कि हमने मास्टर्स करना है। So आपके नज़दीक मास्टर्स राइट अवे कर देना चाहिए राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन या 1-2 साल काम करके करना चाहिए? आपने कब अपना मास्टर परस्यू किया था? So इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बताएं कि व्हाट्स योर टेक? This is actually a $1 billion question because students काफ़ी ज़्यादा ये question करते हैं, especially जो graduate होते साथ ही या 5th year thesis students would come up to us and ask भाई कब करना है masters? So one answer would be जो बड़ा generic है कि जब आपको right feel हो, when you know what you want to do. But personally from my own experience I would say at least 2 years worth of experience, and I'm not just saying कि उससे कोई आपको definitely पता चल जाएगा. It can sometimes take 20 years, 30 years to understand what you really want to do. But what I mean by 2 years of experience is so that you basically solidify whatever you've learned during bachelor's. Otherwise, you can go for masters as well right after bachelor's, but you need to be very sure what you want to do. For any student who asks for my opinion, I always request them कि यार 2 साल at least work and get the experience here, क्योंकि unfortunately once you come back तो उसकी value at least right now इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती. So उसके लिए you need to have experience, and then on top of that when you have masters then you have value in our, at least in our work ethic, in our work culture basically. हमने कहा आपने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया, so how did you choose के मास्टर्स कहाँ से करना है? So it's a funny story जो I think we've discussed before as well. I was fortunate enough to get a scholarship for me to Turkey. So basically 1 साल पहले NUST ने scholarship दिया, 2015 में ही मिल गया था. Then I had to wait 1 year because 16 में I had to go. Funny enough, 9 months down the lane, I realized कि अच्छा ये scholarship HEC वाले अब fund ही नहीं कर रहे. So I went to my father, of course, and just basically told him कि I'm going.
उसमें मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि आई बेसिकली वेंट थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 15-20 यूनिवर्सिटीज. सो वन थिंग वाज वेरी क्लियर कि टॉप यूनिवर्सिटी में कोर्स अच्छा होना चाहिए नो मैटर वेयर इट इज. वन स्मॉल पर्सनल प्रेफरेंस वाज 2 years बिकॉज आई वांटेड कि चलो थोड़ा एक्सपैंड हो जाए 2 साल. आई वर्क देयर एज वेल. सो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी आई थिंक एट दैट पॉइंट वाज 13th or 14th and so urban design was quite good in University of Sydney, so I just went there. सो आपने जिस तरह बताया हमें कि आपने अपना मास्टर्स अर्बन डिज़ाइन में किया है, सो स्टूडेंट्स को किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि मास्टर्स करना किस चीज़ में है? आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने अर्बन में ही मास्टर्स करना है या आपके पास और भी ऑप्शंस थी? तो क्या सजेशंस हैं उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं अपना मास्टर्स? अगेन इसमें पहले अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी देखनी चाहिए. मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी थी कि वंस आई सी पीपल वर्किंग है तो वो मैंने यही नोट किया कि देयर आर्किटेक्ट्स ही सब कुछ कर रहे हैं. लाइक आर्किटेक्ट्स ही सोसाइटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स ही टाउन प्लानर्स बने हुए. लाइक आई नो अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स हू माइट नॉट नेसेसरली बी academically eligible to design for urban design, but they're still working. So I realized there is a big gap where I can come in and I'm still looking for work now in urban design, but that was my thought process. And actually I went after like a year and a half. तो मेरा थोड़ा ये भी था कि आर्किटेक्चर से थोड़ा हट के कुछ हो जाए. Even though right now we're working the most in interior design and architecture, it's funny. And in urban design में hardly 1-2 projects हम कर रहे हैं. तो but yeah, that was my thought process behind it. So like, do you have any एक होता है ना बंदे को कि मैंने अर्बन में मास्टर्स कर लिया लेकिन I'm not practicing it. कि माहीन ने भी अर्बन में किया है, definitely has views on it. So आपने जैसा बताया कि आपका मेजॉरिटी काम इंटीरियर्स का है, रेजिडेंशियल डिज़ाइन का है, तो आपको कभी वो हुआ है कि मैंने अर्बन ही क्यों किया, मुझे उसमें कर लेना चाहिए था, या कोई इस तरह की कोई चीज़? Probably 10% of my heart would say that कि आर्किटेक्चर में ही कर लेता, इंटीरियर में नहीं, आर्किटेक्चर में ही कर लेता. बट जस्ट that is just my own personal preference because I wanted to learn more about architecture. It does not have anything to do with what I'm doing right now. और अर्बन डिज़ाइन पे ज़्यादा काम ना करना right now, I feel like it's more of a thing which is like जो फोर्स की गई है कि अभी काम उस तरह से ज़्यादा हो ही नहीं रहे, और जो हो रहा है I think some other people are of course doing it. So yeah, I'm just waiting for the right moment, but I would definitely like to practice urban design as well. Bare minimum I have been thinking of doing is writing about it. And I am just waiting for the right opportunity to get that. Having seen the opportunities जो है urban design में बहुत कम है. Do you recommend people to do masters in urban design or not? Yes and no. Yes, because I think it is the most untapped field in Pakistan, at least. Yeah. No one really. Again, nothing against the architects or the people who are working as town planners or as urban designers, but you have to be professionally educated for it. It's just like saying कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर कर रहा है तो वो भी उतना ही गलत है, तो अगर कोई आर्किटेक्ट भी अर्बन डिजाइन कर रहा है तो वो भी उतना ही गलत है. You're not professionally ready for it because there are so many layers, as you were mentioning right in the start. There are so many layers that you need to cater to. How do you cater to these things? Because ये define कर लेना कि urban design के अंदर, let's say, या society designing या town planning के अंदर major chunks को decide कर लेना, that is not enough. You need to go into the details. You need to understand कि अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है. And that I think you can get by experience. You can understanding कि जो होगा उससे कितना कुछ हो जाएगा. Impact क्या होगा? Yeah, you spot on. Yes, impact. And I think the biggest takeaway from this is कि impact अभी देख लें क्या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो we can continue with that. Otherwise, I think there's a lot of improvement in this particular regard. That is why I would say yes and no for your last question. कि yes because there is a need, and no because you don't get a lot of opportunity here. So अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, you have the passion to do it, so you can do it. वो आर्किटेक्चर में भी नहीं है. Yeah, but then this is architecture explore हुआ है ना, so yeah, urban design explore नहीं हुआ. It's a very non-transparent field. You're right. Urban design को समझना ही अभी एक sort of मुअम्मा बना हुआ है कि urban design क्या है, urban planning क्या है और urban town planning क्या है.
पहले ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है फील्ड में, तो ये भी समझ नहीं आती कि आप एक्सप्लोर क्या कर सकते हैं प्रोफेशनली. sometimes I am confused with landscape architects, sometimes I'm confused with town planners, sometimes I'm confused. So this is the kind of that field where people are yet to understand. Hopefully they will in due course, but right now it's difficult to understand. Great. So prevailing notion ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि उनको बैचलर्स के फौरन बाद अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए. आपको क्या लगता है? I don't agree with that. I completely we've reached to the point where I request people rather than recommend it. I request them not to start it for a lot of reasons, but the major reason being because these first 2-3 years, that is the time where you can actually explore everything, where you can actually see how other people are working. Honest जो मेरा opinion अपने students या जो मेरे से young colleague जो advice के लिए आते हैं, always tell them कि यार spend 2-3 years and not under just one person, probably two. ऐसा भी ना हो कि आप 5-6 के पास जाएं, but 1 या 2 ऐसे सीनियर आर्किटेक्ट्स हों जिनके पास यू गो एंड यू ट्राई टू लर्न. और वैसे भी डिफरेंट ऑफिसेज में काम करके यू अंडरस्टैंड office culture as well, you understand work ethic as well, you understand some things you learn the things you want to do, and some things you learn that you don't want to necessarily do. So उस सब के लिए I think it's a request to everyone, especially young students, kids. It's very easy nowadays to start practicing your own thing, thinking कि यार there's not a lot of money for junior architects, unfortunately. तो वो उसमें सोचना कि यार इतने कम पैसे, ईयरली मैं 2 प्रोजेक्ट्स भी करूँगा तो उतने ही बन जाएंगे, 3 प्रोजेक्ट्स भी करूँगा तो इट्स वेरी easy to think, but I think first 2 years you need to focus on the learning aspect more on the rather than the earning aspect. That's it. I agree with that, and I also think कि सबके माइंड में ये होता है कि 5 साल हो गए हैं, so अब मैं 2-3 साल और एक्सप्लॉयटेशन जोन में नहीं जा सकता, मुझे अर्न करना है. So वो चीज़ शायद अगर शुरू से थोड़ी क्लियर हो ना कि आपको थोड़ी और ख्वारी करनी पड़ेगी, so ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से लोग वेलकम करना शुरू कर दें. You're right. इसमें थोड़ा सा I think step basically हम आर्किटेक्ट्स को भी लेने पड़ेंगे. I don't necessarily, I'm not calling myself any senior architect for now, but my point is कि if you're offering let's say even internships to students, pay them so that they take something home, they're not reliant on their parents, because once that step is away, then you get a lot of freedom. पैसों की टेंशन खत्म होगी तो नेक्स्ट फिर बंदा सोच के लिए सोचेगा. जहाँ पर सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे आप, वहाँ पर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड देन यू हैव मेजॉरिटी जो सर्वाइवल मोड पे चलती है, हम बहुत दफा ही भूल जाते हैं. मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर वो लोग चूज करते हैं जो थोड़ी एलीट से बिलोंग करते हैं, बट अब भी अगर आप देखें तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं आर्किटेक्चर की फील्ड में. तो इसलिए ये सोचना कि सबकी पोजिशनैलिटी डिफरेंट है और सब लोग सिर्फ शायद सीखने के लिए नहीं आ रहे, वो अर्न करने के लिए आ रहे हैं. दे हैव अ फैमिली टू सपोर्ट समथिंग, तो उसके लिए भी जरूरी है कि सब सोचें थोड़ा सा. Not everyone has the luxury of learning. A lot of students that I've seen मुश्किल हो रहा होता है. तो यहाँ पर आई थिंक आर्किटेक्ट्स को कंप्लेन से ज़्यादा एक्ट करना चाहिए कि भाई यू नीड टू पे एटलीस्ट द बेयर मिनिमम टू मेक श्योर दैट सर्वाइवल इज पॉसिबल, एंड at least we try to do that at ARSYN. Like no unpaid internships basically, even though we're very small, but we say there's nothing called free labor. आप जूनियर वो आर्किटेक्ट्स भी नहीं, वो आपके कॉलीग्स हैं. आप उनका ख्याल रखें, उनको सही रास्ते पे दिखाएं, फिर वो आपकी सुनेंगे भी. You value them, they value you, and then they'll do like everything for you basically. They'll work hard for you. So being a master's degree holder in urban, what is your take on urban developments in Pakistan? क्या future है उन लोगों का जो urban में masters करके आ रहे हैं, वापस ही वहीं practice कर रहे हैं, उनका क्या future? What is your take on it? I always say this thing, future तो bright ही है, but on a serious note, urban developments में I have my reservations. मैं इधर कोई वैसे क्रिटिक नहीं हूँ, और मैं उस पोजीशन पे पहुँचा हूँ कि मैं कोई क्रिटिक कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. और मैं कोई हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक स्मॉल चेंजेस दैट यू कैन ईजिली मेक. क्योंकि हाई लेवल चेंजेस में चीज़ों को पूरा का पूरा प्रोडक्शनाइज कर देना, लोगों की सोच बदल देना, दैट इज
a difficult thing. But there are very small things that you can do. Just notice the user experience, just notice very small things, and that I feel एक जो urban designer या जो जिसने ये चीज़ closely देखी हुई है, वो इस चीज़ को देख सकता है कि just sitting at a place, documenting that place for a week or so, you can easily tell कि यार user behavior यहाँ पे लोगों का कैसा है, and then you very even like I used to give this example while teaching urban design कि यार बाज़ औक़ात एक tree और एक bench is all you need to change the whole space. So the future is bright. I just hope कि हम इस बारे में सोचना शुरू कर दें और इस पे कुछ steps लेना शुरू कर दें, क्योंकि मुश्किल नहीं है ये steps लेना, मुश्किल in a sense के financially मुश्किल नहीं है. इसमें I just want to ask you a question. आपने कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? That's a very good question. अभी तक मैंने इनिशिएटिव कोई नहीं लिया. I keep on thinking कि कुछ लूँ, but I guess I'm just. What are your reservations? Reservations is ज़्यादा. I don't have any reservations from other people because it's honestly everyone needs to take the blame for their own lacking, and I take the blame. I honestly don't have the time to do it. शुरू में मुझे लगता था कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा तो मैं एटलीस्ट पढ़ा रहा हूँ. But for the past 1 year, I taught in NCA for about a year and a half, so in urban design. So I used to be happy कि at least मैं कुछ input दे रहा हूँ, कुछ आगे pass on कर रहा हूँ. But last 1 year I've been very busy with the work, तो मैंने वो भी छोड़ दिया. तो I think the blame is on me rather than anyone. I was a student for 2 years, 3rd year and 4th year as well, and one of the amazing teachers we had. I think I'm lucky enough कि ये भी हमारे urban के teacher थे. He was not only a mentor but a friend as well. So Thank yeah, you. I'm lucky in that way. मैंने शेरयार को कहा था कि ऐसे बोलेगा तो मैं आऊँगा. You are performing quite well in the market. ARSYN Studio ऐसा क्या नया कर रहा है, ऐसा क्या ऑफर कर रहा है जो बाकी स्टूडियोज नहीं कर रहे? I think इस टॉक की शुरू में मैंने एक चीज़ कही थी कि we are very fortunate. Our team is very, alhamdulillah, very strong. Yeah. और something that we take pride in as well, because right from the start we've tried to invest in our team. Okay. And like whatever wherever we are getting, it's because of our team, and it's just कि हमारा जो एक main जो at ARSYN एक motto है वो ये है कि even if like we're doing one project, projects और आ जाएंगे. Like we don't have to run after them. जो एक project आया हुआ है उसको अच्छे से करो, उसको deliver करो. और alhamdulillah, like we've been very fortunate. I have 2 more questions. Yeah, please. पहला, what are your tips for getting good team? मैं fortunate लफ्ज़ बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ, Yeah. ठीक है, तो उसमें भी मैं ये कहूँगा, लेकिन टिप मेनली यही है कि I think what we lack in our different practices in Pakistan is the loyalty towards work, Yeah. from the architects towards the junior architects, Yeah. and the junior architects towards the main architects or the principal architects. Yeah. और उसका one of the main reason is that you're not appreciating them enough. This appreciation could be in any form. Okay. It can be in the form of better pays, it can be in the form of acknowledgement, it can be in the form of telling them they're important. Yeah. I think हम at least we try our best to tell our studio architects that they're doing an amazing job. Yeah. और I genuinely mean it as well कि we have a good team. और उसमें ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे डिलीवर हो जाते हैं तो you keep on getting good work. So employee well-being पे ज़्यादा काम होता है. Yes, we're still working on it. I don't claim कि कोई बहुत अच्छी होगी. अभी भी हम लोग बैठे होते हैं तो they have all the गुस्सा और all the गलतियाँ that we do every day. But still we're working on it, and I think कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं. Inshallah we'll do better. But to answer your question, अगर लोग खुश हैं आपकी कंपनी में, जो वहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, तो ही आपकी कंपनी आई थिंक कुछ कर सकती है, in my personal opinion. Also, since you started a studio, when you're hiring someone, आप क्या देखते हैं? Loyalty या competence? Competence तो I think it's the most important thing. Yeah. Loyalty भी important है, लेकिन competence, अगर competent नहीं है तो आप फिर I think loyalty भी फिर शायद इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज एट सम पॉइंट यू नॉट बीइंग 100% लॉयल इन अ वे कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी अगर नहीं शो कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिहाज से, तो फिर देयर इज नो पॉइंट. बट फॉर अस वी ट्राई टू गेट कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट्स इन आवर टीम एंड देन ट्राई टू डेवलप दैट लॉयल्टी. और एक और जो चीज़ हमने शुरू से सोची थी वो ये सोची थी कि वी डोंट
we focus on creating a studio rather than like principal architects. We've got, even though हम बहुत young हमारी team है, लेकिन we've got like 6-7 architects now, which is like more than a lot of very good firms. So nothing against them, but I feel like studio culture तभी develop होगा जब 4-5 लोग एक दूसरे को काम को critique करेंगे और बैठ के बात करेंगे. So आपने देखा है कि आर्किस्तान हमारा नया प्लेटफॉर्म है, नया तो नहीं ही अब it's been 8-9 months. What is your thoughts about Archistan? Need of the hour, and I think there are other people who are doing, I wouldn't say same thing, but similar things. But I feel like the way you are taking it, I quite like it that you are trying to focus on everyone basically. I just hope that you focus on the architects, the students, junior architects, senior architects, and vendors as well. So as long as the whole team is there, even contractors, I would say, शायद वो लोग भी अगर शामिल हो जाते हैं, and they can give their own input. So I think Archistan is doing good in that particular regard कि हर एक को on same page लेकर आएं, and then think about how to take it forward. Alright, so that will be it. I hope कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. राव, आपके एक्सपीरियंस से और आपने जो कुछ किया है अभी तक सो फार, अर्बन में आपने मास्टर्स किया, अभी इसमें काम कर रहे हैं, आपके इससे काफ़ी लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा. हमारे व्यूअर्स को, वो लोग जो मास्टर्स करना चाह रहे हैं, वो लोग जो प्लान कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी फर्म खोलना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये सेशन जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. So, मैं बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, टाइम निकालने का, अपने थॉट्स शेयर करने का. Very thankful to you. Yes, we are. So be a part of Archistan, and you can do that by visiting www.archistan.com. The registration process is very simple and very easy, so please don't forget to do that. And don't forget to follow us on our socials. And do not forget to subscribe to our YouTube channel for regular updates. So we'll see you soon, inshallah, in next video with a new topic and a new guest. Till then, Allah Hafiz.